Can you see this? Yes, sir. Okay, so we've seen what is equilibrium. Can somebody tell me what is equilibrium? Opposite forces are equal. What is it? I could not hear it. Can you repeat? Sir, opposite forces are equal. Not clear to me. क्या बोल रहे हो आप? She's saying that opposite forces are equal. Okay, right. So when you say equilibrium, एक example दिया था मैंने आपको seesaw का, right? So if there are two persons sitting at the two ends of the seesaw, अगर forces balance में नहीं रहेंगे तो ऊपर नीचे होते रहेगा, right? One person will go up, second person will go down like that, because the forces are not in balance. Balance में रहेगा तो there will be at horizontal position. That is example of equilibrium, right? And when we talk about equilibrium in say heat transfer, what does equilibrium mean in heat transfer? heat transfer पढ़ा है ना आप लोगों ने? Sir, driving force is zero. ड्राइविंग फोर्स इज जीरो. उसका इफेक्ट क्या होता है? No What do you heat. see? No heat transfer, right? Correct. So heat transfer will not take place. When heat transfer not take place? When there is no temperature gradient, right? Temperature gradient delta T is a driving force for heat transfer. बराबर. Similarly, fluid flow देखा है आपने, right? You've seen fluid flow. Fluid flow कैसे होता है? Pressure difference. Pressure difference. Pressure difference नहीं होगा तो fluid flow नहीं होगा, right? So as long as there is pressure difference or temperature difference, there will be change in state, right? The forces are not in balance. So that's how heat transfer and fluid flow takes place. Now let us look at mass transfer, right? A system in equilibrium shows no tendency to depart from that state either by energy transfer through heat and work. Heat का था heat transfer, work का था fluid flow, or mass transfer. Now we are looking at mass transfer. Mass transfer आप कर रहे हो, right? MT1 कर रहे हो, MT2 कर रहे हो आप? 1. MT1, right? So you are looking at mass transfer. So you know what happens in mass transfer. So if there is no what you call driving force, there cannot be any mass transfer also, similar to heat transfer or fluid flow, right? So change of state is caused by driving force. And at equilibrium, there is no driving force for energy or mass transfer. All forces are in exact balance, right? So how is it different from steady state? How is equilibrium different from steady state? You can tell me. Steady state क्या होता है, equilibrium क्या होता है, difference क्या है? Any guesses? सर वो इक्विलिब्रियम में अपोजिंग फोर्सेस जीरो होते हैं लेकिन स्टेडी स्टेट में
नॉन जीरो रहते ना। नॉन जीरो रहता है, कंटिन्यूस हीट ट्रांसफर होता रहता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, राइट? इट्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर. अंडर स्टेडी स्टेट नेट फ्लक्स और ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट फॉर एनर्जी और मास ट्रांसफर. एनर्जी ट्रांसफर होते रहता है, मास ट्रांसफर होते रहता है, बट इट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम. इन दिस स्टेडी स्टेट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. ठीक है. whereas equilibrium में net flux और driving force is zero. Understand difference between these two, steady state and equilibrium. They're not the same. Okay. अगर किसी को डाउट नहीं है, let's move. To transfer of material or energy across phase boundaries occurs still equilibrium established between phases. Right? Mass transfer can happen, heat transfer can happen, energy transfer can happen across phase boundaries. Still equilibrium is established. So examples are, when we breathe, what happens when we breathe? Oxygen dissolves in blood, right? And it जितना भी रहेगा उसका कैपेसिटी ब्लड एब्जॉर्प्शन का, वो लेता है, एंड दैट इज व्हाट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? जैसे आजकल बोलते हैं, राइट, यू डू व्हाट, क्या बोलते हैं, कोरोना के लिए क्या टेस्ट करना चाहिए? कोरोना का एक टेस्ट क्या है? व्हाट डू दे डू इन द हॉस्पिटल्स? स्वैप। स्वैब टेस्ट ठीक है, लेकिन यानी वो टेस्ट है, दैट्स ओके, बट बाकी क्या है? व्हाट डू दे डू इन द हॉस्पिटल्स? व्हाट डू दे मॉनिटर? प्लाज्मा सर वो थेरेपी। ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक कर। ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते हैं, राइट? अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो देन इट इज डेंजर. That means the lungs are not functioning properly. Oxygen is not being supplied to the blood, and that will affect your uh, basically the whole body. ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो परफॉर्म करना नहीं करेगा, राइट? दूसरा है एग्जांपल वी हैव सीन टी. घर पे चाय बनाते हैं, राइट? सो व्हेन यू पुट पाउडर इन बॉइलिंग वाटर, उसमें चाय एक्सट्रैक्ट हो जाता है, राइट? पानी ब्राउन हो जाता है, एंड देन यू कैन मेक टी, राइट? लेकिन क्या होता है, व्हेन यू गो आउटसाइड, when you buy tea outside, you see that the tea is being reused. होता है कि नहीं? एक बार में फेंक देते क्या वो चाय पत्ती? यस, नो, डोंट नो? ऑब्जर्व किया है कि चाय फेंक देते हैं क्या लोग? घर पे तो फेंक देते हैं हम लोग, एक बार चाय उबाल के फेंक देते. बाहर में फेंक देते क्या एक बार में? No, sir. हाँ. नो सर। कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग ऐसा रीयूज करते हैं, राइट? क्योंकि उसमें थोड़ा बचा रहता है टी एक्सट्रैक्ट, so they continue extracting, right? So equilibrium हो जाता है, then there is no more extraction. Alcohol distillation is again mass transfer होते रहता है between dilute alcohol and what you get at the top of the distillation column. Gas liquid absorption, we have seen all these examples in PC. Calculations किया है हमने. Liquid extraction, leaching. Sir, your voice is not clear. Volume is not clear. Okay, so Voice. अभी आ रहा है आवाज? सर आवाज है ना कम आ रहा है बहुत। सर आप माइक से थोड़ा दूर बैठे हो, इसके लिए थोड़ा कम आ रहा है शायद. माइक से दूर तो नहीं बैठा हूं मैं. अभी आ रहा है क्या आवाज? सर आ रहा है, बराबर आ रहा है आवाज. सबको प्रॉब्लम है कि किसी एक दो को प्रॉब्लम है आवाज का? सर अभी आ रहा है. आ रहा है, ठीक है. सो आई हैव मूव्ड, या आई हैव मूव्ड लिटिल क्लोजर टू द माइक. थोड़ा दूर था, बट ठीक है. So there are very many examples of mass transfer which you'll see in your MT1, MT2, right? And we'll see in this our thermo what are the limits of mass transfer, and that is what we are defining. Maximum कितना mass transfer हो सकता है, that we define in thermo. जैसे हमने define किया था Carnot efficiency. What is Carnot efficiency? What was Carnot efficiency?
याद नहीं है किसी को? Can you hear me? Hello. Yes. Carbon efficiency किसी को याद नहीं है? What is carbon efficiency? Who can tell me? Dikshita? Sir, any maximum possible. Yeah, maximum efficiency possible for heat engine, right? उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता. Practically, you always get less than that. So similarly, we are going to define the maximum mass transfer which can take place in any of these operations. Distillation bolo, absorption bolo, extraction bolo, leaching bolo. We will define the limits of mass transfer. That's the purpose of thermodynamics. And actual जो रहता है वो is always less than maximum. What you actually get in reality, in practice, is always less than what is defined by thermodynamics. And that is why we study thermo. उससे ज़्यादा हम कोशिश भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, ना कभी नहीं मिलता है. Okay. Okay. So let's look at relationship between temperature, pressure, and composition at equilibrium. Okay. तो इसमें phase equilibrium problems में क्या होता है? What we will be looking at is if the temperature and pressure is given, then we have to find composition of phases in equilibrium. जैसे liquid vapor equilibrium हो रहा है, इस distillation में होता है liquid vapor equilibrium, और temperature pressure define किया हमारे को, then we can find out what is the composition of the different phases, liquid and vapor. और अगर equilibrium composition दिया हुआ है तो then we can find temperature and pressure. Either way, एक दिया है दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा दिया तो एक निकाल सकते हैं. That's what we will be doing in our phase equilibrium study. ठीक है? So let's look at what is the criteria of equilibrium. When do you define equilibrium between phases? So criteria of internal equilibrium is thermal and mechanical equilibrium. Temperature and pressure are uniform, right? हमने देखा था temperature has to be uniform, then there is no heat transfer, and pressure has to be uniform, then there is no flow of the fluid. Right? That is what we have seen. That is mechanical equilibrium and thermal equilibrium. Temperature represents thermal equilibrium. Pressure represents mechanical equilibrium. ये given है, right? You know that. For thermodynamic equilibrium, we need additional criteria. Mass transfer should not occur between phases. Right? हमने देखा था net driving force is 0, so there is no mass transfer. That is a thermodynamic equilibrium condition. So no mass transfer between phases in vapor liquid equilibrium. And we'll see derive what is the mathematical form of this condition or criteria. Okay. So now we are forming the basis for all that. ये सब basis है उसके लिए. So reversal process हमने देखा है, right? You have seen it in thermo 1. What is the reversal process? When do you define a reversal process? How do you define? नहीं याद किसी को? Thermo 1. If process can be reversed without a change in the surroundings. Yeah. See, when are reversal processes practically possible? Are real processes reversible? No, sir. No, sir. No. So all real processes are irreversible, and what we call them as irreversible or spontaneous. बराबर? मैंने एग्जांपल दिया था आपको. The water will flow from the top of the mountain to the bottom. It cannot flow from bottom to top. Direction जो हमारा बोलते हैं, first law says it does not what you call predict the direction, but second law helps us predict the direction of flow. So reversible is when there is a very small change between two states, and then it is possible to go back
from state 1 to state 2 to state 1. That is the reversal process. It is called infinitesimal direct driving force. That means very, very small driving force, delta T. Suppose it is 0.01 or something like that. Then it is possible to go back to the previous state. And this is an imaginary. Practically, you don't see any reversal processes. It's not possible. The reversal process रहेगा ना, so it will take infinite time for heat transfer or mass transfer because driving force is very low. Right? Heat transfer में क्या होता है? Q is equal to what? What is Q in heat transfer? Q क्या होता है? Q is equal to what? What is the equation for heat transfer? UA delta T. UA डेल्टा टी MCP डेल्टा टी जो भी है राइट. सो डेल्टा टी अगर बहुत ही स्मॉल रहेगा, सपोज डेल्टा टी इज 0.01, तो अगर क्यू हमारे को फाइनाइट रखने का है तो इट टेक इनफाइनाइट टाइम राइट. बहुत बहुत टाइम लगेगा बिकॉज क्यू इज फ्लक्स राइट. हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम अगर रहेगा तो टाइम बहुत लग जाएगा. एंड दैट इज व्हाई ऑल द रियल व्हाट यू कॉल प्रोसेसेस आर irreversible or spontaneous. The finite driving force है ये delta T has to be finite for significant or required heat transfer. Similarly, mass transfer करेगा. Right? So let us look at Clausius inequality. कभी देखा है Clausius inequality? पढ़ा है क्या? I think ये heat phase CET 1 में था, but I don't know अगर cover हुआ था कि नहीं हुआ था आपका. But it was part of CET 1. Okay. So Carnot principle says reversible heat engine is more efficient than irreversible heat engine. That we all know, right? And Carnot efficiency is eta C is equal to 1 minus T cold upon T hot. ठीक है, याद है किसी को? So consider an irreversible heat engine operating between T hot and T cold, right? So the Carnot is reversible. So consider, suppose there is an irreversible heat engine between these two temperatures, heat source and heat sink, TH and TC. And let dq1 be the heat absorbed. Heat absorption कहाँ होता है? Carnot engine, Carnot cycle, source में होता है, right? There is source and sink. So dq1 is heat absorbed in the source and dq2 is heat rejected in the sink, right? So there is a source. वहाँ से dq1 transfer हो रहा है to the what do you call, क्या रहता है बीच में? सोर्स और सिंक के बीच में हीट इंजन में क्या रहता है बिटवीन सोर्स एंड सिंक? कुछ याद नहीं है. सिद्धि? Engine, sir. इंजन? अरे इंजन तो पूरा इंजन है राइट. व्हाट इज देयर इज अ सोर्स एंड देयर इज सिंक. उसके बीच में क्या रहता है? टरबाइन रहता है ना, which converts heat into work, right? So the source is providing dq1 energy to the turbine, which is generating the work output W or electrical power, and dq2 is heat rejected to the sink, right? Source and sink के बीच में heat transfer हो रहा है, right? Generation of power. Eta is nothing but output upon input. Efficiency is already defined as output upon input, right? Output is W here, बराबर? Output is W. बराबर? Output is energy output or electrical output, and input is dq1. And what is energy balance किया तो dq1 is equal to W plus dq2. So W is equal to dq1 minus dq2. ठीक है? So if we take that, eta is equal to 1 minus dq2 upon dq1.
is for an irreversible engine. For reversible engine, it is 1 minus T cold upon T hot. Okay. And we know that efficiency of reversible heat engine or Carnot cycle is always greater than efficiency of irreversible heat engine. So we can write 1 minus Tc upon T hot is greater than 1 minus dq2 upon dq1. Eta c is greater than eta. Okay. So if it can cancel 1 from both the sides, what you get is minus T cold upon T hot is greater than minus T dq2 upon dq1. And if you take temperatures on each other side, dq1 minus dq1 by T hot, ये इधर लेके आया हमने. Take this on this side. टेम्परेचर इधर लेके आया तो क्या मिलेगा माइनस dq1 by 10 माइनस dq2 upon T cold और dq2 minus dq2 by T cold minus dq1 by T hot is greater than 0. ठीक है, इक्वेशन 3. राइट, इसको इधर लेके आया हम लेफ्ट राइट साइड वाले टर्म को राइट लेफ्ट हैंड में लेके आए तो व्हाट यू गेट इज dq2 upon T cold minus dq1 upon T hot is greater than 0. और यू कैन राइट, अगर नेगेटिव साइन कर दिया उसका तो dq1 by T hot minus dq2 by T cold is less than 0. साइन चेंज हो जाएगा when you multiply by -1. ठीक है, इक्वेशन 4. डाउट्स ऑन इक्वेशन 4. ओके, but heat rejected अपना sign convention is always negative, right? Heat absorbed is positive, heat rejected is negative, right? Sign convention हमने देखा था energy का, right? If you take system, Q is positive when heat is added to the system and negative when it is rejected by the system. Refresh नहीं हुआ क्या? Not getting refreshed, is it? Okay. So sign convention हमने देखा था ये, right? Heat added to the system is positive and heat rejected by the system is negative. दोनों कन्वेंशन में, ओल्ड एंड न्यू कन्वेंशन में हीट का यही रहता है. वर्क के लिए ओल्ड कन्वेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव. न्यू कन्वेंशन में उल्टा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. सिर्फ यही डिफरेंस है ओल्ड एंड न्यू कन्वेंशन में, हमने देखा था पहले. So sign convention dq is negative, that means heat rejected is negative. If we put absolute value of the Q2, सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर. हेलो, स्क्रीन भी सर विजिबल नहीं है अभी. सर स्क्रीन शेयर करो ना. थांब, रेंजचा प्रॉब्लेम असेल.
Hello, can you hear me now? Yes, sir. आवाज आ रहा है? Network issues. आ रहा है सर. Let me see if I can share this. Okay, दिख रहा है क्या अभी? Can you see? No, sir. No, No, sir. sir. दिख रहा है क्या अभी? Yes, sir. दिख रहा है अभी? आवाज आ रहा है? हाँ, sir. Okay. So we have seen this equation for dq1. Let me check. So we have seen dq1 by t hot minus dq2 upon t cold is less than 0, right? And by sign convention dq2 is negative because it is heat rejected. So हमने minus dq2 equal to minus dq2 डाला and absolute value डाला उसका. What we'll get is dq1 by t hot plus dq2 upon t cold less than 0, right? That means dq2 is negative, dq1 is positive. ठीक है, इक्वेशन 5 समझ में आया? इक्वेशन 4 से 5 कैसे आया? Sir, repeat. नहीं समझा सर. नहीं समझा. इक्वेशन 4 समझ में आया? इक्वेशन Yes, 4 sir. is clear? Yes, sir. dq2 is heat rejection is always negative by sign convention. बराबर. तो हमने ये अगर यहाँ पर इसका साइन कन्वेंशन से डाला यहाँ पर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पर माइनस माइनस डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू टू हो जाएगा, राइट? सो इफ से डी क्यू टू इज नेगेटिव तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, राइट? इसको हमने साइन कन्वेंशन से डाला, जैसे यहाँ ला डी क्यू टू डी क्यू वन अपॉन टी एच प्लस डी क्यू टू अपॉन टी सी लेस देन 0 बोला. और डी क्यू वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, डी क्यू टू इज नेगेटिव, राइट? नेगेटिव डाला यहाँ पर तो सेम आ जाएगा हमारे इक्वेशन 5 and 4, right? Because this value is always negative, dq2. If we put, suppose this is dq1 is 100 plus 100 joules, joules, and dq2 is say minus 40. तो हमने plus 100 upon t hot, ये minus 40 upon t cold, तो सेम इक्वेशन मिल जाएगा हमारे को. So just using sign convention to represent a form which you want to show. ठीक है? Because dq2 is always negative, dq1 is always positive. So, an irreversible cycle can be divided into small heat engine cycles with infinitesimal changes. ये आपने देखा होगा पहले, राइट? कभी देखा है? ये एक मिनट बुक में दिखा सकता हूँ.
ओके, ये दिख रहा है कि आपको पेंट? Yes, sir. If I take any process like this, right, right, and this is I think PV रहता है. If I can divide this into very small Carnot cycles. Right, so I can take any process, if it is cyclic process, I can divide it into n number of small cycles of heat in Carnot cycle which are infinitesimal. छोटा change रहेगा, right? Small changes का कर सकता हूँ मैं, right? That is what Carnot Sir, cycle you are is, right? not audible. क्या बोल रहे हैं? What was it? Can you repeat that? कमेंट क्या था आपका? प्लीज रिपीट. ठीक है, नॉट आवाज नहीं आ रहा मेरा क्या? Okay, so let's do this. So what we can do is at the irreversible cycle में always there is a finite delta T, suppose it is 10 degrees centigrade, right? So we can make small step changes of say 0.01, 0.01, 0.0, infinite हो जाएगा, right? So we can change a irreversible cycle into very small cycles of infinitesimal change, very small changes. That means we can make a irreversible process into n number of reversible processes. That's how we can make an equivalent of it, right? So what we have seen is here हमने डिराइव किया था इक्वेशन 5, उसको हम लिख सकते हैं फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस dq by t is less than 0 for all irreversible processes. Is this understood? Equation 6. Can you hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Right, समझ में आया? So what we are saying is instead of writing for dq1 by th plus dq2 by t code, we can write it for a cyclic process. Summation or integral of dq by t is less than 0 for all irreversible processes. जितना भी process रहेगा, it will add up to this. But for reversible process cycle we have seen dq by t is equal to 0. ये बात definition था अपना second law का, right? ds is equal to 0 for reversible process. And what is happening? It's changing.
ठीक है. So problem आ रहा था. I have started again. So dq1 by th plus dq2 by tc is less than 0. हमने दिखाया, right? So for irreversible process, any irreversible process can be made into small reversible processes, very small delta t or driving force, and we can write for all irreversible processes. ये दोनों ऐड किया तो it is integral और cyclic process के लिए dq by t is less than 0. That means जितना भी लेंगे प्रोसेस सबका ऐड करके it will add up to this integral. And we have seen, but for reversible process this is equal to 0, right? This from ds is equal to dq by t. For reversible process delta s is equal to 0. So therefore we can write, combine these two and say dq by t for a cyclic process is less than or equal to 0 if you combine these two. Equation 8 समझ में आया? Any doubts on equation 8? Yes, sir. Okay, so this is called Clausius inequality. That means for a cyclic process, the sum of dq by t for a complete cycle is equal to 0. This for reversible processes because delta s is 0. Delta s is state function. So start से end, जहाँ से start किया वहाँ end किया तो it will be 0. And for irreversible process, it is always less than 0. This is called Clausius inequality. Any doubts, questions on Clausius inequality? So, and we have seen for reversible process ds or change in entropy is nothing but dq by t for reversible process. So we can write, if we combine these two, 8 and 9, ds is greater than or equal to dq by t. ठीक है, equation 9. So ds is nothing but dq by t. So we can write for reversible process ds is, or for all processes, ds is greater than or equal to dq by t, where equal sign is for reversible process. That means ds is equal to dq by t for reversible processes, and it is greater than dq by t for irreversible processes. Any questions on this? So inequality is for entropy change of irreversible processes whose ultimate result will be equilibrium state. पहले रहेगा unsteady state और अगर heat transfer होता रहेगा, mass transfer होता रहेगा, but then they'll reach equilibrium and then there'll be no heat transfer or mass transfer. ठीक है? सर तो पार्ट थोड़ा सा रिपीट करो ना, वो समझे नहीं. क्या नहीं समझा? Equation 9. सर वो 0 को एंट्रोपी से कैसे रिप्लेस किया, वो नहीं समझा. ये समझ में आया? Equation 8 integral cyclic हाँ process सर, वो आया. less than 0, right? But we know for reversible process ds is equal to dq by t. This is our second law of thermodynamics, right? याद है ये? हाँ सर. Second law में ये था, right? So if we take this dq by t is less than or equal to 0 and ds is equal to dq by t, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन दोनों कंबाइन किया तो? ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा. Delta S is always increasing for irreversible process, पता है ना? Entropy is always increasing of the universe, right? So reversible के लिए dq by t रहेगा, तो irreversible के लिए it will always be greater than dq by t. That is our entropy definition. You always go from a क्या बोलते हैं उसको, chaos is always increasing बोलते हैं ना. So you go always go towards increase in entropy.
of the universe. So dq at ds is always going to be greater than what is there for reversible process. रिवर्सिबल के लिए हमने देखा था, राइट, सेकंड लॉ, और वहीं पर बताया था कि इरिवर्सिबल के लिए ds इज ग्रेटर देन dq by t. Okay, sir. Okay, so now let us go back to deriving what actually we want for our equilibrium. So first law says du equal to dq minus dw. So we get dq equal to du plus dw. इधर लेके आए तो, and Clausius inequality says ds is greater than or equal to dq by t. That is second law. This is the second law statement. Actually, ds is greater than or equal to dq by t. Right. So TDS is greater than or equal to dq. Right. So if we substitute for dq from this equation, what you get is TDS is greater than or equal to du plus dw. ये इधर डाला हमने. Or we can take du to this side and dw to this side. What you'll get is du is less than or equal to TDS minus dw. And dw is nothing but expansion work. We always talk about expansion work. कि constant pressure पे volume change हुआ तो क्या होगा? So dw is equal to pdv. So what we get is du is less than or equal to TDS minus pdv. And this is called combined statement of first and second law. So what we have done is we have used first law of thermodynamics and second law of thermodynamics to derive this equation. And combined statement is du is less than or equal to TDS minus pdv. समझाइए इक्वेशन 10. Yes, sir. Okay. So now you'll use equation 10 for deriving criteria of equilibrium. Now these are bases. Basically हमने Clausius inequality से ये निकाला. Basically second law से भी ये था. And then we combined first and second law to derive this equation 10, which will help us in actually deriving the criteria of equilibrium. So essentially first and second law से ही पूरा equilibrium criteria आता है अपना. So I'll not continue from here. We'll continue next time. Almost 10 बज गया है. So if there is any doubt on equation 10, you can ask now. Sir, equation 5 में doubt था. Equation 5. Equation 5 में क्या था? हाँ, क्या डाउट है इसमें? सर अगर मेरी Q2 की वैल्यू -40 है तो यहाँ पे प्लस डालनी है या माइनस इस इक्वेशन में? तो यहाँ पे हाँ, तो क्या बोला, अगर -40 है तो क्या हो जाएगा? तो क्या डालनी है, प्लस डालनी है या माइनस डालनी है? माइनस डालने की है. According to sign convention, dq2 is always negative. Then only this equation 5. अच्छा, मतलब dq1 पॉजिटिव लेना है साइन कन्वेंशन से ऑलवेज, एंड dq2 नेगेटिव लेना है साइन कन्वेंशन से ऑलवेज. तो यहाँ पर प्लस 100 आएगा अगर dq1 प्लस है, सोर्स से 100 जूल्स आ रहा है तो प्लस 100 आएगा. और यहाँ पर अगर सिंक में 40 जा रहा है तो -40 आएगा. देन ओनली इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4 विल बी सेम. यहाँ पर साइन कन्वेंशन नहीं लिया था हमने, तो दैट वाज व्हाई इट वाज कमिंग माइनस. यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है, इज एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन 4 में. साइन कन्वेंशन लिया तो इट विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है, इट वाज जस्ट टू गेट दिस फॉर्म, क्योंकि इंटीग्रल में हरदम पॉजिटिव रहता है. यू ऐड, राइट, इंटीग्रल इज एडिंग, एडिशन ऑफ एरियाज अंडर द कर्व. तो वो करने के लिए हमने ये साइन कन्वेंशन यूज किया, एंड वी गेट dq1 by th plus dq2 by tc is less than 0. So we can represent that as summation for all dq by t or cyclic integral. ठीक है. यस सर. और इक्वेशन 10 में किसी को डाउट है? दिस इज आवर बेसिस फॉर ऑल फर्दर वर्क. इक्विलिब्रियम को इसी बेसिस पे हम पूरा डिराइव करने वाले हैं.
ठीक है, if there are no further questions, we can stop here.